न्यूक्लियोप्लाज्म, a thick liquid present in the nucleus. न्यूक्लियस में भी हमारे पास thick liquid है which is known as nucleoplasm. Next we have nucleolus. Nucleolus, it is a spherical part which contains genetic material which contains RNA. What is the full form of RNA? Ribonucleic acid. And what is the function of RNA? It is responsible for the production of protein in the body. And next we have chromosomes also present in the nucleus. What is chromosomes? Each chromosome are having DNA, deoxyribonucleic acid. What is DNA? क्या है हमारे पास DNA? It is also known as hereditary unit of living organism. या जीन्स भी हम इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो जीन्स, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ग्रैंडफादर टू फादर, जो जनरेशंस टू जनरेशंस पास होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पर है? जीन्स में, और वी कैन से DNA. So what is the function of nucleus? The main function of nucleus is to pass the hereditary characteristic from parents to their child, from generations to generation. It control the functions of the cell. Cell के जितने भी functions हैं उन सबको कौन control कर रहा है? हमारा nucleus. Now we have cell organelles in the cytoplasm. We are having cell organelles. क्या है हमारे पास cytoplasm में cell organelles? First cell organelle is mitochondria. What is the mitochondria? It is the main source from which energy is produced. जो हमारे पास एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से. सो इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Why it is known as power house of the cell? When we eat food, जब हम कोई खाना खाते हैं, when we inhale oxygen with the help of food and oxygen, क्या प्रोड्यूस होती है बॉडी में? एनर्जी. वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज power house of the cell. It is present in plants and animals as well as. Next we have endoplasmic reticulum. What is the function of endoplasmic reticulum? Its function is to transport the substance. जो भी सेल ने मान लो प्रोटीन बनाया है, वो आउटसाइड द सेल कौन लेकर जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बाहर से ऑक्सीजन लेकर आनी है, बाहर से फूड लेकर आना है सेल तक, वो कौन लेकर आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is to transport the substance from the cell to the outside and from the outside towards the cell. Next we have rhizobiums. What is rhizobiums or what are ribosomes? Ribosome is also known as protein synthesis part. जितना भी सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है वो कौन बना रहे हैं? राइबोसोम. Ribosome are found both in plant and animal cell, so you can say it is a source of protein. Next we have Golgi bodies, which is also